Hi, all the students. Yes, welcome to Iconese Cat. Welcome to a fantastic live session on para summary. तो कैट 2024 को लेकर स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सेशंस भी पीपल आर टेकिंग एंड दैट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश बट इफ यू टॉक अबाउट quantitative aptitude as well as GI plus LR, a lot of things, a lot of content we people are actually doing on this particular channel. So all the students please ensure that जितने भी ये सारे वीडियोस हैं आप लोग वॉच करते रहें. अंडरस्टैंड, बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं. यस. So welcome all the students, welcome to Iconese Cat, and today we are going to have a fantastic session on para summary. So para summary के बारे में हम बात करेंगे. I'm just waiting for a few students to join, and once the students are with us, we are going to start with the session. And जो भी students इसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, उन सब स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन, इन सब क्वेश्चंस को सबसे पहले पॉज करो, खुद ट्राई करो, एंड आफ्टर दैट यू पीपल हैव टू मैनेज टू गिव दी एंड लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन देम. ओके, डन. ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ सेशन ऑन para summary. We'll be discussing 5 very important questions based on para summary. और जब स्टूडेंट्स मैं इसके पैटर्न को डिस्कस करूँगा, it will actually help you in understanding how to get accurate answers in reading comprehension also. So this discussion is not only about para summary, but the tricks which we are going to discuss, and moreover, we people will try to understand कि जो paper setter है वो कैसे students हमें various options में confuse करता है. तो ऐसा बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं. I want everyone to get ready. Yes, good evening everyone. Good evening. Okay. सर आप स्नैप का कोर्सेस, यस एब्सोल्युटली यस, बहुत जल्दी से स्नैप का पूरा कोर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च. ओके, आज अपन बात करते हैं पैरा समरी की, और मेरे साथ इस पूरे क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करना. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपको इतना मज़ा आएगा एंड जेन्युइनली इंग्लिश सीखने को मिलेगा. यू विल एक्चुअली कम टू नो कि कैट किन चीज़ों पर फोकस करता है. एंड व्हेन आई एम टेकिंग दीज क्लासेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई फोकस इज एक जो लेमैन है जो कैट को लेकर अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स में भी अगर मैं कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाया इंग्लिश को लेकर. आई हैव सीन मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स प्योरली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के, बट स्टिल दीज पीपल हैव गॉट मोर देन 96, 97, 98 परसेंटाइल इन कैट इंग्लिश. तो दैट बिकम्स अ रियल ग्लोरी फॉर अस. सो हियर वी बिगिन. चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स एक बार फटाफट जो भी लाइव है, आई वुड अप्रिशिएट अगर एक बार चैट बॉक्स में कमेंट कर दें. गुड इवनिंग, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. अगले 30 मिनट्स जो पीपल आर गोइंग टू एंजॉय द बेस्ट सेशन ऑन इंग्लिश. एंड स्टूडेंट्स, इतनी ज़बरदस्त आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. एंड बिलीव मी, मैं इतना इसलिए बोस्ट कर पाता हूँ बिकॉज इतने सालों में आई हैव सीन दिस, और इतने सारे क्वेश्चंस को करवाने के बाद किस तरह से हम ऑप्शंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें. एंड वी पीपल हैव टू इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि पेपर सेटर की साइकोलॉजी क्या होती है. अनलेस वी अंडरस्टैंड द पेपर सेटर साइकोलॉजी, how actually they trap a student in a wrong answer, we won't be able to get the correct answer. And moreover, all the students do understand, हम कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत जल्दी से किसी ऑप्शन से कन्विंस हो जाते हैं. What is more important is हमें बहुत जल्दी से कन्विंस नहीं होना है. Critical thinking is very important if we really want कि कैट में accuracy improve हो जाए. And moreover, students, 24 questions VARC, and 24 में से 16 questions will be based on passages, and remaining 8 questions will be based on the various other patterns. जिसमें para jumbles can be one of the patterns, para summary can be there, and sometimes a blank is given to us where a paragraph is given to us where 4 blanks are there, and we need to find out कि कौन सा sentence किस particular blank में fit होगा. तो इस तरह के बहुत सारे questions possibly CAT में आते हैं. But students, the best part is जितने भी questions हैं all are reading oriented, understand. तो बस अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो. बिलीव मी स्टूडेंट्स, मेक रीडिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. यू लव रीडिंग, दैट बिकम्स द फर्स्ट कंडीशन. आई सी मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स दे हेट रीडिंग. उन्हें लगता है कि सर दिस इज अ वेरी बोरिंग टास्क, कैसे होगा सर, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, एंड वी हेट इट. स्टूडेंट्स, इस माइंडसेट के साथ, इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अगर आप पैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू वोंट बी एबल टू डू वेल देयर. स्टूडेंट्स, अगर आप जेन्युइनली बहुत अच्छा करना चाहते हो, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो. इंग्लिश को लेकर, रीडिंग को लेकर, एम्ब्रेस इट.
आप सबसे पहले तो माइंडसेट बदलो, आप पॉजिटिव हो जाओ कि सर इंग्लिश रीडिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश में स्टूडेंट्स कोई कमरा बंद करके बहुत सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना कैजुअली आप रीडिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बनाओगे, यू विल सी लाइक इंग्लिश और कैट, इसको क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील। No technical questions based on grammar, no memory based questions based on vocab. Pure we need to test your understanding, that's it. तो केवल आपके passages की अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है, आप कितना अच्छा पढ़ पाते हैं, कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाते हैं, whether you are able to read between the lines or not. So I believe that CAT का ये जो पैटर्न है, it is actually very much helpful for the students जो बहुत अच्छा vocab और grammar में नहीं है। केवल रीडिंग, समझदारी दिखाओ, समझदारी दिखाओगे, आई एम वेरी श्योर getting the correct answers will become easy for us. Okay, chaliye, so students, yes, there is one question. Is Aeon good for reading or not? All the students try to understand one thing. In case already आपकी reading बहुत अच्छी है, so in that case you people can actually go for the Aeon passages. Actually what happens is when I talk about Aeon essays, there is a common complaint which a majority of the students make. They say that sir, the essays are very lengthy and moreover the language, it is not easy to comprehend. So you can start with it, but if you feel like these essays are actually very typical, you are not able to understand, and instead of helping, if these essays they actually make you demoralized, तो मुझे लगता है फिर उसको अपन skip कर सकते हैं. And nowadays students अगले 150 दिनों में what you people have to majorly focus upon is directly solving passages. So instead of going for general reading of the essays and all, I would appreciate if you keep solving more and more passages. Students किसी भी article को पढ़ें तो उसके basis पर there have to be some questions, and unless you are able to understand and solve the questions, we will not come to know that improvement is there or not. तो Aeon essays अपनी जगह बहुत अच्छे हैं if you people are able to understand. एक essay रोज पढ़ना start करो, but उससे important कम से कम 3 passages हम daily solve करना start करें, 3 passages daily, and उसमें से 2 passages as of now. Don't fix any time, you just get into the details, you just try to understand the passage, take your own time. If you're not able to understand by reading once, read it twice, read it thrice. But students जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हो सकता है किसी पैसेज को समझने में अभी 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, बट स्टूडेंट्स वो पेशेंस जरूर दिखाओ. एंड एक बार आपने वो पेशेंस दिखाया, 3 बार 4 बार पढ़कर भी उस पैसेज को समझ पाए, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. और धीरे धीरे स्टूडेंट्स विल सी लाइक सिर्फ एक बार पढ़कर यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जस्ट ऑफ द पैसेज. सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस, अंडरस्टैंड. एंड इंग्लिश का इंप्रूवमेंट सबसे स्लो आता है. मैथ्स में DILR में आप 1 महीना मेहनत करोगे, यू विल फील लाइक यस सर इंप्रूवमेंट आ चुका है, बट इंग्लिश यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. ओके, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the basic concepts of para summary. So actually students, in para summary what happens is a question is given to us, a paragraph is given to us, and we people have to find out which option best captures the essence of the paragraph. Okay, try to understand which option best captures the essence of the paragraph. So this becomes the very first question. I want all the students अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करो, टेक योर ओन टाइम एंड गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. आई वुड अप्रिशिएट जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, देखिए एक चैट बॉक्स में आंसर जरूर दें. Yes, everyone, this becomes the very first question. Everyone, go through it properly, and among the 4 options, find out which option best captures the essence of the paragraph. बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत करना. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. एंड मेरे साथ फिर जब मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उसे भी सुनते हुए चलना. यस, yes, come on, start giving the answers now.
Yes, yes, yes. Let me see who becomes the first student to give the answer. Come on, everyone. आराम से take your own time, read it twice, but try to give the correct answer. And I do understand, possibly किसी word का meaning हमको नहीं भी पता होगा. And that is the real challenge. Students, when we don't know the meanings of some particular words, but still if you manage to give the correct answer, that is the real test जो CAT actually देखना चाहता है. तो ऐसा नहीं होता कि हर बार मुझे हर वर्ड का मीनिंग पता होगा, बट स्टिल नहीं भी पता है, वी कैन स्टिल मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. अंडरस्टैंड. और कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस वर्ड का मीनिंग क्या पॉसिबली हो सकता है. यस, शैल आई स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ? कम ऑन एवरीवन, आर यू पीपल गिविंग द आंसर्स और नॉट? अभी तक तो एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं मिला है. चल, वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर. So Rushan has given the answer. Okay, okay. Option B. Okay, Rushan. Let me wait for the other answers. Come on, rest of the students, last 30 seconds. Okay, one more student has given the answer, option B. Okay, okay, rest of the students, come on, hurry up. It's a wonderful question, and if you people are able to give the answer to this question, that means, yes, you people are CAT stuff. आप ये मान के चलो कि आप CAT के लिए बने हो. अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस CAT में आते हैं. चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. नाउ सी, Vance Packers, the hidden persuaders, alerted the public. Now see, students, try to understand. This becomes the name of the author and possibly this becomes the name of a book. स्टूडेंट्स, छोटी चीज़ों पर हमेशा ध्यान दो. जैसे यहाँ पर कैपिटल लिखा है. तो Vance Packers, the hidden persuaders, alerted the public to the psychoanalytical techniques used by the advertising industry. Its premise was that advertising agencies were using depth interviews to identify hidden consumer motivations, which were then used to entice consumers to buy goods. Critics and reporters often wrongly assumed that Packard was writing mainly about subliminal advertising. Students, कभी आप लोगों ने एक word सुना है? What is sublime? Okay, you people will have to understand what is the meaning of this word. चलो मान लेते हैं इस word का meaning नहीं भी पता है. Still, we can manage to give the correct answer. But अगर students इसका meaning पता है, तो it will become easy for us to give the correct answer. Subliminal का मतलब होता है below the level of mental awareness. Try to understand, below the level of mental awareness. Okay, उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं subliminal. और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे एक और वर्ड है. ओके, supraliminal. इसका बेसिक मतलब होता है above the level of mental awareness. above the level of mental awareness. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना. सब का मतलब है मेंटल अवेयरनेस से नीचे, सुप्रालिमिनल का मतलब है अबाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ मेंटल अवेयरनेस. ठीक है, चलिए. वैसे भी स्टूडेंट, सबलाइम का मीनिंग क्या होता है? सबलाइम इज समथिंग जो आपको बहुत अंदर तक टच करे. जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम इफ यू गो टू मनाली, इफ यू गो टू सम हिल स्टेशन एंड यू सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, तो जैसे आप उन्हें देखोगे, सबसे पहला जो एक्सपीरियंस होगा, दैट इज सबलाइम एक्सपीरियंस. तो सबलाइम इज समथिंग जो आपके माइंड के नीचे तक स्टूडेंट्स आपको असर डालता है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सबलाइम. तो सबलिमिनल, बिलो द लेवल ऑफ द मेंटल अवेयरनेस. चलिए समझना स्टार्ट करते हैं. तो क्रिटिक्स एंड रिपोर्टर्स ऑफन रॉन्गली assumed that Packard was writing mainly about subliminal advertising. Now students, try to understand. The author says that actually Packard ने मेजरली क्या बोला? Packard ने ये बोला, its premise was that advertising agencies were using depth interviews to identify hidden consumer motivations, which were then used to entice consumers to buy goods. So Packard says actually जो hidden consumer motivations हैं, advertisers majorly उसे focus करते हैं. और इसी को बहुत सारे critics ने क्या समझ लिया कि Packard majorly किसकी बात कर रहे हैं? He is mainly talking about the subliminal advertising.
Packard never mentioned the word subliminal, however, and devoted very little space to discussions of sub-threshold. Threshold का मतलब वापस से वहीं जहाँ से mental awareness का level start होता है. Okay, तो try to understand. The author of the paragraph says, Packard ने कभी भी subliminal के बारे में बात ही नहीं की. Understand. Instead, his views largely aligned with the notion that individuals do not always have access to their conscious thoughts and can be persuaded by supraliminal messages without their knowledge. So you people try to understand इस पूरे paragraph को अगर मैं समझूं, okay, the main point of the paragraph is what? The main point is Packard actually talks about कि जो deep hidden consumer motivations हैं, advertisers उन्हें target करते हैं and they entice the consumers to purchase the products. But बहुत सारे critics ने क्या समझा कि Packard is actually talking about the subliminal advertising, whereas the author says actually this is not the case. Packard subliminal के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं और कहीं पर भी Packard ने subliminal तो mention ही नहीं किया. Understand? Packard is actually talking about supraliminal advertising, and Packard says that even if the advertising is targeting above the mental level of awareness, but still many times it happens like people are actually not aware of their thoughts. So what Packard wants to say, he wants to say that advertising supraliminal होने के बाद भी, above the level of mental awareness होने के बाद भी लोग अपने thoughts को लेकर aware नहीं होते हैं and advertisers उसी को target कर रहे हैं. So that is what the point is. So now students, coming on, 4 options में से we need to find out what is the correct answer. Packard argued that advertising as a hidden persuasion understands the hidden motivations of consumers and works at the subliminal level. Students, first option cannot be the correct answer because first option बिल्कुल opposite बात कर रहा है. Packard actually subliminal level की बात कर ही नहीं रहे हैं. Packard is majorly talking about supraliminal. That is the reason first option cannot be the correct answer. Coming on the second option, Packard held that advertising as a hidden persuasion understands the hidden motivations of consumers and works at the supraliminal level, though the people targeted have no awareness of being persuaded. I think students second option should be the correct answer because majorly जितनी बातें लिखी है, everything second option covers in that. And the best thing happens to be it actually talks about the supraliminal level, and that is what the author is talking about. The second option is indeed one of the best answers. Let me see the other options as well. And moreover, students, try to understand our job is not to find out the correct answer. Our job is actually to find out the wrong answers. आप जब तक option elimination पर नहीं जाओगे, students आप देखोगे accuracy improve नहीं होगी. My honest suggestion to all the students, don't get convinced with the correct answer. You always try to ensure that you always try to remain critical about the wrong answers. आप तो students हमेशा जब भी किसी question को solve करो, please ensure that until and unless we are convinced about why this particular option is wrong, don't leave it. तो आप हमेशा कोशिश करो, don't convince कि why this answer is correct. Just try to convince why this option should be wrong. And जिस option को लेकर हम convince नहीं कर पाए why this option has to be rejected, that indeed becomes the correct answer. Coming on the third one, Packard held that advertising as a hidden persuasion builds on people's conscious thoughts and awareness by understanding the hidden motivations of consumers and works at the subliminal level. Students, third वैसे भी इसलिए गलत हो जाएगा because ये Packard का thought है ही नहीं. Understand. Coming on the fourth one, Packard argued that advertising as a hidden persuasion works at the supraliminal level. Absolutely correct. Wherein the people targeted are aware of being persuaded. जबकि students Packard तो ये कह रहे हैं कि people are actually not aware that they have been targeted or they have been persuaded. So anyway students, यहाँ पर जो aware लिखा है, this is wrong. So students, the best answer here happens to be second option. And kudos to all those students who have got the correct answer. Wonderful. And now students, we are going to take the second question. Perfect. Well, students, coming on the second question. Yes. Now this is the question we started with yesterday, but possibly वो live streaming हो नहीं पाई. But anyway students, ये question भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है. And this becomes an actual question of slot 1 CAT 2023. Okay, I have taken it so that I can ensure that
सभी स्टूडेंट्स को पता चले कि जेन्युइनली कैट का लेवल क्या होता है. ओके, चलो, आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव द करेक्ट आंसर नाउ. यस, कम ऑन. एंड जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज इंश्योर दैट हमें आंसर जरूर देना है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर. At least you people can be bindas and giving the answers here. Yes. Come on, everyone, start giving the answers. Yes, come on. Yes, come on. So what is the correct answer to this question? And this becomes an actual question of CAT 2023. और इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा स्टूडेंट्स, उसे ढंग से समझना. बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे ऑप्शंस आपको एक्चुअली कंफ्यूज करते हैं. And you people have to be careful about the usages of commas, okay, and the various other things as well. Punctuation marks भी कई बार स्टूडेंट्स पूरे मीनिंग को चेंज कर देते हैं. Yes, Roshan has given the answer. See, okay. Come on, rest of the students, what are you waiting for? Start giving the answers now. Yes, come on. चलिए, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. कॉलोनियलिज्म. ओके, एनीवे स्टूडेंट्स, अगर आपको पहले से पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, इवन इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे को कॉन्कर करता है. एंड इन फैक्ट स्टूडेंट्स, वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाता है. कॉलोनी का मतलब लिटरली कॉलोनी नहीं, कुल मिलाकर जब एक देश दूसरे को कैप्चर करता है एंड वहाँ पर सेटल होना स्टार्ट करता है. द रेजिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, दे स्टार्ट्स सेटलिंग देयर, एंड वहाँ का पूरा पॉलिटिकल डोमिनेंस भी वो अपने पास ले लेते हैं. सी, इंडियंस एनीवे वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, so the complete political dominance was with the Britishers only. तो अगर स्टूडेंट्स इस वर्ड का मीनिंग पहले से पता है तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू गिव द करेक्ट आंसर. और सबसे इंपॉर्टेंट तो पैराग्राफ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा. एंड इवन इफ स्टूडेंट्स यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, वेट एंड वॉच. द कॉलोनियलिज्म इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमिनन. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज समथिंग जो बहुत पहले से चल रहा है. तो इट इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमिनन. World history is full of examples of one society gradually expanding by incorporating adjacent territory and settling its people on newly conquered territory. In the 16th century, colonialism changed decisively. Try to understand, 16th century में colonialism decisively change हुआ because of technological developments in navigation that began to connect more remote parts of the world. The modern European colonial project emerged when it became possible to move large numbers of people across the ocean and to maintain political control in spite of geographical dispersion. Naturally, navigation बहुत easy हो गया, इसीलिए जो देश बहुत डिस्टेंस पर थे उन पर भी स्टूडेंट्स कंट्रोल कर पाना became possible. तो 16th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया. And students, the term colonialism is used to describe the process of European settlement, violent dispossession, and political domination over the rest of the world, including the Americas, Australia, and parts of Africa and Asia. Students, when I talk about Americas, तो इसमें North America भी include होता है and South America भी include होता है. तो कुल मिलाकर this paragraph talks about colonialism. It says that ये पहले से था, इट इज़ नॉट अ मॉडर्न फिनोमिनन, बट इट सेज दैट 16th सेंचुरी में इसका नेचर काफ़ी हद तक चेंज हो गया एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन. So this is something which is given in this particular paragraph. Now tell me students, कितनों का आंसर सही है? Let me see, so many students have given the answer. सूरज सिंह has given C पहले और उसके बाद D किया. सोनल का आंसर D है. Sagar Mattu has given the answer D and Manish Chand has given the answer
अच्छा, आंसर नहीं दिया, सत श्री अकाल, बिल्कुल। तो बेटा आंसर दे दो जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। First option says colonialism surged in the 16th century due to advancements in navigation, enabling British settlers abroad and global dominance. सबसे पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स मैं ग्लोबल पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कॉलोनियलिज्म सर्ज्ड इन द 16th सेंचुरी, जबकि स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है कि 16th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म चेंज्ड डिसाइसिवली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैराग्राफ में लिखा है इट चेंज्ड और हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा, इट सर्ज्ड। तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो चेंजेस हैं वर्ड्स में, दिस बिकम्स अ ट्रैप। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मैं चेंज डिसाइसिवली को सर्च कह सकता हूँ? सर्च का मतलब तो होता है आगे बढ़ना, सर्च का मतलब तो होता है और अग्रेसिव हो जाना, अंडरस्टैंड। सो इवन इफ आई डू अंडरस्टैंड दैट कैन बी एसेंस ऑफ द पैराग्राफ, बट स्टिल आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट इन 16th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म चेंज। तो वहाँ पर स्टूडेंट सर्च करना आई वोंट रिकमेंड इट, बट फिर भी फर्स्ट ऑप्शन को वापस से कंसिडर करेंगे अगर कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है तो। कमिंग ऑन स्टूडेंट सेकेंड वन, as a result of developments in navigation technology, European colonialism led to the displacement of indigenous populations and global political changes in the 16th century. Now see students, बहुत ही ब्यूटिफुली, ठीक है, पेपर सेटर आपको सेकेंड ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन नेविगेशन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशंस and global political changes. Students, we are talking about global political dominance, understand. जबकि स्टूडेंट्स चेंजेस किस में हुआ, चेंजेस हुआ कॉलोनियलिज्म में, जबकि स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस इवन द कंट्रीज they are able to maintain their control, their political dominance on the countries which are very distant apart. तो स्टूडेंट्स political changes, ये जो वर्ड है ना, this is actually not correct. The second option may be, students, there is a flaw, therefore I don't go with second option. Coming on the third one, colonialism conceptualized in the 16th century. Third, students आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, because ये कहना कि colonialism conceptualized in the 16th century is wrong. Because students, in the very first line it is mentioned that colonialism is not a modern phenomenon. तो जब ये modern phenomenon है ही नहीं, तो ये कहना कि it was conceptualized in 16th century is a wrong interpretation of what is given in the paragraph. And coming on the fourth one, technological advancements in navigation in the 16th century transformed colonialism, enabling Europeans to establish settlements and exert political dominance over distant regions. I would believe, students, fourth option is indeed the correct answer. बाकी सब options में कोई ना कोई flaw है, but fourth option is absolutely correct. And you people can see that technological advancements have taken place in 16th century. Absolutely. Transformed colonialism. यहाँ पर students लिखा है changed. तो change की जगह अगर मैं transform ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है. And students, enabling Europeans to establish settlements and exert political dominance. So yes, we are talking about political dominance. Hence, fourth option is the best answer. So इस तरह से students, you people have to understand. सभी ऑप्शंस को कंपेयर करो और हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, अंडरस्टैंड। यू पीपल सी, अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या किया था, सर्च्ड, विच इज नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डोमिनेंस वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस। एंड थर्ड ऑप्शन में स्टूडेंट्स, अगेन colonialism was not conceptualized in 16th century, hence third option is also wrong. So the only correct answer is fourth option. तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जितने क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे आपका जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बिकम मोर प्रोफाउंड। स्टूडेंट्स, नेवर एवर टेक एनी ऑप्शन टेकन फॉर ग्रांटेड। अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, अपने ऑब्जर्वेशन को जितना इन डेप्थ करोगे, हर माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट को नोटिस करना स्टार्ट करो। एक पेपर सेटर कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, पैराग्राफ में वर्ड्स कुछ होते हैं और वो अपना इंटरप्रिटेशन कुछ और देता है। So this is something which you people have to understand. Now coming on students, the third question. Yes, another very interesting question, not so tough question. I guess everyone can manage to give the correct answer.
यस, कम ऑन एवरीवन, पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ इस क्वेश्चन में एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. या, कम ऑन, स्टार्ट प्लीज. Let me see who gives the first answer. Yes, everyone, what is the correct answer? Come on, Sagar, Sonal, Suraj, Manish, Rushan, everyone start giving the answer, be fast. Yes, चलो डिस्कस करना स्टार्ट करें. और जो भी स्टूडेंट बाद में इसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहा है, प्लीज इंश्योर दैट कि पॉज करके सबसे पहले यू पीपल सॉल्व एंड गिव द आंसर. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर्स. इफ एनीवन कैन गिव, आई विल बी वेरी हैप्पी. पार्टिसिपेशन पूरा रखो, अंडरस्टैंड. और ये जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, यस, बिकम द पार्ट ऑफ दैट. कम ऑन, शैल वी डिस्कस इट नाउ. चलिए, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन वाज अ फीचर ऑफ history long before modern journalism established rules of integrity. The students, this particular paragraph talks about manipulating information, and the very first line says it was a feature of history. मतलब बहुत पहले भी होता था. Before modern journalism established rules of integrity. A record dates back to ancient Rome when Antony met Cleopatra and his political enemy Octavian. ऑक्टावियन के बारे में सुना है स्टूडेंट्स? ही वॉज द फर्स्ट किंग, रोमन एम्परर. ही वॉज द फर्स्ट रोमन एम्परर इन फैक्ट. ऑक्टावियन लॉन्च्ड अ स्मीयर. स्मीयर का मतलब होता है, बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो, डर्टी. आपके लॉन्च्ड अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट हिम with short, sharp slogans written upon coins. The perpetrator became the first Roman emperor, and fake news had allowed Octavian to hack the republican system once and for all. So students, the paragraph says that Octavian भी fake news के basis पर ही he could become the emperor of then Roman Empire. But the 21st century has seen the weaponization of information on an unprecedented scale. Powerful new technology makes the fabrication of content simple, and social networks amplify falsehoods peddled by states, populist politicians, and dishonest corporate entities. The platforms have become fertile ground for computational propaganda, trolling, and troll armies. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ ये बोलना चाहता है कि फेक न्यूज़ पहले भी होती थी, पर 21st सेंचुरी में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है. अंडरस्टैंड. फेक कंटेंट बनाना हैज़ बिकम सो इजी नाउ. हमने रिसेंटली देखा है इलेक्शंस में किस तरह से अमित शाह के स्पीच को भी बदल दिया गया और उसे वायरल कर दिया. तो फेक न्यूज़ को स्प्रेड करना हैज़ बिकम वेरी इजी in the 21st century. And this is what the states have been doing, the populist politicians have been doing, and the dishonest corporate entities have been doing. So this is something, the essence of the paragraph. अब सोचो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से we need to find out the correct answer. Let us see which is the best answer now. Disinformation. वैसे स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में अगर मैं देखूं, डिसइंफॉर्मेशन वर्ड कहीं नहीं है.
manipulating information is given. Okay, so anyway, students, there is a small difference between what is disinformation and what is misinformation. डिसइंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब होता है इंटेंशनली गलत जानकारी देना सो दैट आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सको, जबकि मिस इन्फॉर्मेशन कई बार इट इज़ नॉट इंटेंशनल। अंडरस्टैंड, मिस इन्फॉर्मेशन तो हो सकता है लापरवाही में भी कोई गलत जानकारी चली जाए, बट डिसइंफॉर्मेशन में तो आप इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन देते हो सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस समवन और masses whatever. So coming on the first one, disinformation which is mediated by technology today is not new and has existed since ancient times. अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि इस पैसेज का मेन एसेंस क्या है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो कॉमास के बीच में जो फ्रेज मैंने लिखा है वो फ्रेज हमेशा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि मेन जो सेंटेंस है व्हाट इज दैट, डिसइंफॉर्मेशन इज नॉट न्यू एंड हैज एग्जिस्टेड since ancient times, और साथ में कुछ added information मैंने दे दी, it is mediated by technology today. Now you people try to understand. First option should not be the correct answer because first option कहीं ना कहीं इस बात पर फोकस करता है कि disinformation is not new. जबकि इस पूरे पैराग्राफ को जब मैं पढ़ता हूँ तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना नहीं है, अंडरस्टैंड, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि 21st सेंचुरी में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड ऑल, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना हैज बिकम सो कन्वीनियंट एंड सो इजी नाउ, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा मेंशन करना कि इट इज मीडिएटेड बाय, आपके ये वर्ड भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, अंडरस्टैंड, जिस अग्रेशन के साथ और जिस सिवियरिटी के साथ दिस पैराग्राफ हैज बीन रिटन, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट मैच। वन, इट मेजरली टॉक्स अबाउट दिस फेक न्यूज़, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट न्यू, बट स्टूडेंट्स हमारा पर्पस कुछ और है। बट एनीवे, फर्स्ट ऑप्शन वी विल वेट एंड वॉच। सेकेंड ऑप्शन, people need to become critical of what they read, since historically weaponization of information has led to corruption. Anyway, students, to be very honest, the main purpose of writing the paragraph is not that people need to become critical of what they read. Students, देखो इस पैराग्राफ का पर्पस ये नहीं है कि लोगों को सावधान करना कि people need to be more critical or need to become critical of what they read. That is not the purpose of writing the paragraph. The purpose of writing the paragraph is just to say that कि फेक न्यूज़ बहुत पहले से भी चलता था और 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की वजह से इसका स्प्रेड बहुत कन्वीनियंट हो गया। एनीवे स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन एक अलग दिशा में जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। द फोकस इज नॉट करेक्ट हियर एंड सिंस हिस्टोरिकली वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज लेड टू करप्शन। एनीवे स्टूडेंट्स, 21st सेंचुरी में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना हैज़ बिकम मोर कन्वीनियंट, उसके बारे में तो देर इज़ नो रेफरेंस गिवन इन द सेकेंड ऑप्शन। तो आई गेस जब तक मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूँगा, उसकी वजह से जो चेंजेस हुए, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम एन वेपन नाउ, बिकम अ वेपन नाउ। इफ आई डोंट टॉक अबाउट दैट, आई डोंट थिंक सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग ऑन द थर्ड वन, use of misinformation for attaining power, a practice that is as old as the Octavian era, is currently fueled by technology. See students, if I say fueled by technology, this is absolutely correct. अब इसको आप compare करो mediated by technology. Yes, when I say fueled by technology, yes, because of technology, you people see that misinformation को spread करना has become very easy. So if I say fueled, it is perfect. Second, use of misinformation for attaining power, a practice that is as old as the Octavian era. And anyway, students, I've given the complete reference to that era also. तो अगर मैं अपने एसेंस में उस वर्ड को यूज करूं एंड रेफरेंस देता हूं ऑक्टावियन ईरा का, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ओके। द थर्ड ऑप्शन, आई सी देयर इज नो प्रॉब्लम विद द थर्ड ऑप्शन। एंड यस, व्हेन आई टॉक अबाउट अटेनिंग पावर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. So when I talk about states, when I talk about politicians, when I talk about dishonest corporate entities, what is the main objective of misinformation? That is to gain power. Let it be political, economic, or business-wise, whatever. So third option is indeed the correct answer. Coming on students, the fourth one, Octavian used fake news to manipulate people and attain power and influence, just as people do today.
स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोर्थ ऑप्शन में तो पूरा अप्रोच ही चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मिस इन्फॉर्मेशन, वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग स्पेशली ऑन Octavian, what he used to do. So Octavian used fake news to manipulate people and attain power, just as people do today. जबकि स्टूडेंट्स हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, इसको स्प्रेड करना हैज बिकम वेरी मच ईजी। द थर्ड ऑप्शन इज इंडीड द करेक्ट आंसर। आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स विल एग्री विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल। यस, वन मोर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉट इजी टू आंसर एंड पॉसिबली दिस क्वेश्चन में कंफ्यूज यू। यस, आई वांट एवरीवन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। एक बार पैराग्राफ को मैं आपके साथ पढ़ता हूँ एंड इसके बाद स्टूडेंट्स आप चारों ऑप्शंस में कंपेयर करके ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स से privacy challenged office workers may find it hard to believe, but open plan offices and cubicles were invented by architects and designers who thought that to break down the social walls that divide people, you had to break down the real walls too. Modernist architects saw walls and rooms as downright fascist. Students try to understand, okay, architects and especially the modern architects, उन्हें क्या लगता है किसी भी ऑफिस में जब वॉल्स होते हैं, रूम्स होते हैं, ये बहुत फास्टेस्ट अप्रोच है, एक तरह से स्टूडेंट्स डोमिनेट करने का अप्रोच है। जबकि एक एक ओपन प्लान ऑफिसर्स जहाँ पर स्टूडेंट्स यू पीपल डू अंडरस्टैंड, एक एक देयर आर नो रूम्स, नो केबिन्स, ओपन प्लान ऑफिसर्स, या पॉसिबली स्टूडेंट्स केवल क्यूबिकल्स हो जहाँ पर हर आदमी एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो लेट अस सी, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द स्पेशियसनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ओपन प्लान would liberate homeowners and office dwellers from the confines of boxes. But companies took up their idea less out of a democratic ideology than a desire to pack in as many workers as they could. The typical open plan office of the first half of the 20th century was a white-collar assembly line. Cubicles were interior designers' attempt to put some soul back in. स्टूडेंट समझना, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने क्या देखा कि जब ऑफिसेस में रूम्स होते हैं, कैबिन्स होते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली इक्वालिटी नहीं होती, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पर डोमिनेंस होता है, अंडरस्टैंड। दैट इज द रीज़न दे थॉट कि ओपन प्लान ऑफिसेस जहाँ पर सब एक हॉल में बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो इक्वालिटी रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी, छोटे बड़े का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू वांट क्यूबिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, बट स्टिल उसमें भी इंटरेक्शन प्रॉपरली हो सकता है। तो क्यूबिकल्स एंड ओपन प्लान ऑफिसर्स, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेसी को फोस्टर करना, इक्वालिटी लेकर आना, एंड सभी एम्प्लॉयज़ में अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट। सो दैट वाज व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज। बट कंपनीज ने इस ओपन प्लान ऑफिस को किस तरह से यूज़ करना स्टार्ट किया, उन्हें लगने लगा कि ओपन प्लान ऑफिसर्स का बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एडवांटेज क्या है, यू कैन एक्चुअली पैक सो मेनी एम्प्लॉयज़ इन अ स्मॉलर प्लेस। अगर सबको रूम देना है, कैबिन देना है, तो बहुत सारी स्पेस चाहिए। तो ओपन प्लान ऑफिसर्स में द बेस्ट थिंग इज ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आप बिठा सकते हो, तो दैट बिकम्स द एडवांटेज। तो अब आप जस्ट इमेजिन करो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ओपन प्लान ऑफिसर्स एंड हाउ दिस कंपनीज have actually manipulated the objectives and how these companies have started taking the advantage of a genuine thought, understand, a noble thought. So this is what the paragraph actually talks about. ये तो ठीक है, फिर भी क्यूबिकल्स की वजह से थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज़ को स्पेस मिल जाता है, अदरवाइज तो स्टूडेंट्स आप देखो ओपन प्लान ऑफिसर्स में कंपनीज मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को उसमें फिट करने की कोशिश करती है। तो एक तरह से द कंपनीज हैव स्टार्टेड exploiting, okay, the employees, the workers in the name of open plan officers. Yes, open plan officers का objective कुछ और था and companies have started doing something else. So students, what is the best answer here? Yes, क्या लगता है? If you compare all the options, क्या लगता है students, which is the best one? Yes, 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 everyone, please give the answer. Let me see how many students are able to give the answer. Okay, shall I? First option says wall-free office spaces did not quite work out as desired and therefore cubicles came into being.
That is a very wrong interpretation of what is given in the paragraph. Actually, open plan officers and cubicles दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यस एम्प्लॉयज़ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो और ये जो डिवीज़न है इसको ख़त्म करना. तो इट इज़ नॉट द केस दैट कि ओपन प्लान ऑफिसर्स या एक वॉल फ्री ऑफिसर्स दे वर नॉट वर्किंग देयर फॉर क्यूबिकल्स पर प्लान. नो, नॉट एट ऑल. ये जो लास्ट लाइन है ना, cubicles were interior designers attempt to put some soul back in. Actually, when the company started going for complete wall-free officers and started packing the workers there, तब architects ने कम से कम cubicles बनाना start किया कि कम से कम थोड़ा तो comfort मिले, understand. Okay, कम से कम employees को थोड़ा तो space मिले, understand. तो actually cubicles इसलिए आए कि wall-free officers did not quite work. This is a very, very wrong approach. The students' first option is not correct. Second, wall-free office spaces did not quite work out the way their utopian inventors intended, as they became tools for exploitation of labor. Students try to understand wall-free office spaces का जो concept है वो क्यों नहीं काम कर पाया the way the utopian inventors intended. Actually, utopian का मतलब है the people who believe that everything has to be ideal. हर चीज़ बहुत अच्छी हो, आइडियल हो, आदर्श हो. तो ये इन्वेंटर्स तो बहुत अच्छा सोच रहे थे, but actually wall free officers बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे पाया? What is the reason? As they became tools for exploitation of labor. Because companies ने इन wall free officers को tools बना लिया तो exploit labor. Actually companies को लगा कि बहुत कम स्पेस में आप ज़्यादा लेबर्स को बिठा सकते हैं when wall free officers आ गया. तो ये सेकेंड ऑप्शन कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ की एसेंस से मैच होता है. Coming on the third one, wall-free office spaces could have worked out the way their utopian inventors intended. Are companies cared for workers' satisfaction? अब सोचो स्टूडेंट, जो थर्ड है ना, ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये कॉन्सेप्ट वर्कआउट हो जाता अगर कंपनीज वर्कर्स सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखती. स्टूडेंट समझो, जब मैं सेकंड ले रहा हूँ, थर्ड लगभग उसी डायरेक्शन में उसी तरह से है, बट इट टॉक्स अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेसिकली. तो मुझे लगता है अगर मैं बी एंड सी को कंपेयर करूं तो इट इज़ बेटर कि मैं सेकेंड ऑप्शन पर स्टिक हो जाऊं, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन तो बहुत डायरेक्टली कहता है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ये कॉन्सेप्ट वर्कआउट होता अगर कंपनीज ऐसा सोचती, तो पॉसिबली अगर सेकेंड नहीं होता तो मैं शायद थर्ड ऑप्शन की तरफ जाता. बट व्हेन वी हैव द ऑप्शन ऑफ सेकेंड ऑप्शन विच इज़ वेरी डायरेक्टली गिवन, आई थिंक वी शुड स्टिक टू दैट. Both wall-free office spaces did not quite work out as companies don't believe in democratic ideology. Students, wall-free office spaces did not quite work out as companies don't believe in democratic ideology. Actually, students, wall-free offices had worked out, but not in the way the inventors intended. So try to understand, ये कहना कि wall-free offices का concept ही fail हो गया, नहीं. कंपनीज ने उसको बहुत सक्सेसफुली अडॉप्ट किया, बट कंपनीज का अप्रोच कुछ और था, अंडरस्टैंड. तो इसीलिए द कॉन्सेप्ट डिड नॉट फेल, द कॉन्सेप्ट डिड नॉट वर्क एज पर द यूटोपियन इन्वेंटर्स इंटेंशंस. So therefore, students, I will go with second option as the correct answer. Okay, so students, second is indeed the correct answer, and this becomes the last question. And ये question students आपके लिए home assignment है. You people can go through, type the answer in the chat box, and this question we are not going to discuss, but you people will have to give the correct answer. So I am giving you 1 minute of time to go through it and mark the correct answer. अभी आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स और भी बहुत अच्छे सेशंस अपन लेंगे, राइट. कभी कभार थोड़ा सा मुझे आज लगा कि इवन आई एक शुड हैव एक और बेटर इसको करेंगे इनफैक्ट. ओके, लाइव में स्टूडेंट्स बस आप लोग इंटरैक्ट करते रहो एंड यू विल सी इन द कमिंग डेज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी पीपल आर गोइंग टू डू. एंड कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप ज़रूर बताओ किस टॉपिक पर आप अपनी क्लासेस चाहते हैं, तो वी विल प्लान लाइव अकॉर्डिंगली. एंड जितनी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूँ, एक भी वीडियो को मिस मत करना स्टूडेंट्स. एक वीडियो ढंग से मेरे साथ सॉल्व करना एंड यू विल सी लाइक हाउ मिरेकल हैपन्स, यू विल कम टू नो. ओके, आपको लगेगा वास्तव में आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई, अंडरस्टैंड. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई वांट यू पीपल टू गिव द आंसर्स.
Yes, come on, hurry up. चलो, इसके आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे. Okay, you people can take the screenshot of this. And here students, we people are going to end the class. तो yes, हम लोग अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं. फिफ्थ का आंसर वैसे आ चुका है. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए. सो थैंक यू एवरीवन for staying live with us and making this session so lively, and thank you to all the students who have been giving answers to almost all the questions. But answers dete rehna is very very important. And students, make reading a part and parcel of your life. आप रीडिंग को स्टूडेंट्स हेट मत करो, यू जस्ट एम्ब्रेस इट. इतना मज़ा आता है पढ़ने में, और अगर उस मज़े के साथ आप पढ़ोगे तो यू विल सी लाइक अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगा. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अभी आपका लेवल कुछ भी हो, जस्ट कीप डूइंग. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आप एक बार अपना माइंडसेट बदलो, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, चलिए. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स. गुड बाय फॉर नाउ.